नर्मदापुरम विरोध प्रदर्शन करने के लिए चेन्नई से नई दिल्ली जा रहे किसान संगठन के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को देर शाम पुलिस ने जीटी एक्सप्रेस से उतार दिया। इसके बाद गुस्साए किसानों ने स्टेशन पर ही नग्न होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस हंगामे के बीच 2 घंटे से अधिक समय तक जीटी एक्सप्रेस स्टेशन पर ही खड़ी रही। इस कारण ट्रेन में सवार यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेन से उतारे गए कार्यकर्ता दिल्ली जाने के लिए पुलिस से वाद विवाद करते रहे, लेकिन पुलिस ने भी सभी कार्यकर्ताओं को वापस ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि ऊपर से मिले निर्देश के अनुसार किसान संगठन के कार्यकर्ताओं को नर्मदापुरम में रोककर यहां अस्थायी हॉल्ट देना था। इसके बाद उन्हें वापस चेन्नई भेजना था। तमिलनाडु के राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को जीटी एक्सप्रेस में विभिन्न स्टेशनों से सवार हुए थे, जो दिल्ली पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन करने वाले थे। पुलिस ने विभिन्न इनपुट और ऊपर से मिले निर्देश के अनुसार किसान संगठन को स्टेशन पर रोक लिया, जिसके लिए नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील किया गया। How many farmers along with you? We have 300 farmers came from Tamil Nadu. Okay. Because day after tomorrow, our Honorable Prime Minister go to Tamil Nadu at Coimbatore for inaugurating a natural food production. So far, he has not given any help to the natural food production. He imported the genetically modified seed, and for 500 crores, he spent that and he gave the farmers. So if any person eat the food cultivated from the genetically modified seed, the boys will be important. The girls will not be pregnant. So that's the reason we are agitated. Tomorrow go to Prime Minister house. We want to agitate there. And we will sit there without dress there also. Now we started from Madras yesterday. Evening 6 o'clock. Now we came to Narmadapuram here, and the police, more than 300, 400 police came, and they got deboarded from the train. And what is the reason to deboarded? They told that Delhi there is a problem for you. Now what is the next plan? We will ask the police to arrest and send to the jail. We will not send to the jail. We will stay there. We will not come out of the house. Because we came here only for save the people of India. Even if a nation is a very powerful nation, not with the military. Even if there will be no food for the military for 2 days or 3 days, the military will not be in the front. Oh, they will come out. If you will beg for food from the foreign country. How many organizations allied with you? Sir, only one organization. That is the National South Indian River Interlinking Farmers Association. Already our Honorable Home Minister promised us, I will interlink the Godavari and Kaveri. So for 6 years back. So far he has not taken any steps. As per our Prime Minister also promised, give 2-time profitable price on agricultural products. But that he has not done it. So that's the reason we came here, we agitated. We will agitate it once again. If you have not done it, we will commit suicide. Thank you.